Public notices or general notices. What are public notices? Public notices or general notices are announcements or pieces of information conveyed to a large section of people. Tender notices, notices for admission, court notices or auction notices are some kind of public notices. Now come to know about the features of a public notices. A public notice is very formal in tone and style. Its language is simple so that it can be easily understood by the general public. It is brief and to the point. However, all the relevant points, facts are clearly stated. The name and signature of the issuing authority is given at the bottom of the notice. The date of the issue of the notice is given either at the top or the bottom of the notice. So, all these features which are important, which play important part to write and attempt a notice writing. You can also come to know about formal languages and you can avoid informal languages. You can also give attention on relevant matter and avoid irrelevant matter, and you also write the notice in a simple language, formal language, and you also be included relevant matters. It is also in brief and to the point. So this is the format of the public notices. Capital Finance Company have terminated the services of their agent Suraj Prakash, who used to get orders and advances from their customers, write out a public notice for a newspaper on behalf of the firm announcing the termination of the services of the agent and telling people that they will deal with Suraj Prakash only at their own risk. So you can make a box and then you can write public notice in capital alphabet letters. After that you can also mention the date, that is 21 October 2020. Capital Finance Company, Ajmal Khan Road, New Delhi, do hereby declare that they have terminated the services of their agent Suraj Prakash. Now, he is not responsible for any deal on behalf of the company. The customers are informed that they should have no dealing with him concerning this company. If they give him any advance or place orders with Mr. Suraj Prakash, they will do so at their own risk and the company will not be responsible for any such deals. Robin Smith, Director, Capital Finance Company, Ajmal Khan Road, New Delhi. You can mention your name. After that you can mention your designation, that is you are the director, and you can mention the name of the company, Capital Finance Company. After that you can mention the road, that is Ajmal Khan Road, New Delhi. This is a warning notice. Second notice is you are Khazan Singh, General Manager, Haryana Roadways, Ambala. Write a notice to be published in a newspaper announcing that the qualifying written test for lower division clerk has been fixed for 30th June for the candidates whose name have been sponsored by the Employment Exchange, Ambala. अब यहाँ पर आपको एक तो पता लग गया कि किस टॉपिक पे आपको नोटिस लिखना है, दैट इज़ क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट फॉर लोअर डिवीज़न क्लर्क. डेट भी मेंशन हो गई 30 जून को है. सो आपने यहाँ पे 25 मई आप 5 डेज़ बिफोर मेंशन कर सकते हो. अगर आपको डेट गिवन नहीं है तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं. आफ्टर दैट आपको ये भी पता लग गया जो कैंडिडेट हैं जिनके नाम स्पॉन्सर्ड किए गए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अम्बाला की तरफ से, सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में. आफ्टर दैट यू कैन राइट पब्लिक नोटिस, ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज अम्बाला. आपको 30 जून डेट मेंशन है, सो यू कैन राइट 25 मई 2020. आपको ईयर मेंशन नहीं है. It is for the information of all concerned that the qualifying test for the post of lower division clerk for the office of the undersigned has been fixed for 30th June 2020. आपको टाइमिंग मेंशन है, so you can write the timing at 10 AM. You can mention the name of the school, means center like SD Senior Secondary School Ambala. It is only for those candidates whose names have been sponsored by the Employment Exchange Ambala. The test will consist of 2 pages ऑफ इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज. आपने पैटर्न भी बता दिया, आपने मार्क्स भी बता दिया और टाइमिंग भी बता दिया. ईच ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन. आफ्टर दैट यू कैन राइट द नेम खजान सिंह. यू कैन राइट योर डेजिग्नेशन जनरल मैनेजर. यू कैन राइट दैट हरियाणा रोडवेज अम्बाला. नाउ वी कम टू नो अबाउट academic notices. You are the director of Rajiv Competitions Coaching Academy. Write a suitable admission notice pointing out some special features of your academy. राजीव कंपटीशन कोचिंग अकेडमी आपको नेम गिवन है. J2 वेस्ट पटेल नगर, आपने एक तरीके से इसका साइन बता दिया, लोकेशन बता दी, न्यू दिल्ली. एडमिशन नोटिस.
Admissions to fresh batches for intensive coaching for competitive examinations are going to start from 25th October 2020. We have excellent arrangement for coaching in IAS, HCS, UPSC, CGS and other competitive examinations. Our expert faculty members teach with latest audio video aids and tape recorded lessons. For details, contact the director, Rajiv Competition Coaching Academy, J2 West Patel Nagar, New Delhi, and phone number you also need to mention. Then the next is, you are the director of the Indian School of Arts and Crafts. Draft a notice announcing admission to short-term courses in different arts and craft. Indian School of Arts and Crafts. So you can mention the location 212 like 212 Lalit Kala Road, New Delhi. You can write admission notice in capital alphabet letters. After that you can describe the content. Admission to the following short-term arts and craft courses are open. Pot making for 6 months, painting for 1 year, doll making for 6 months, flower arrangement for 6 months, handmade paper manufacturing for 6 months. The last date for application for admission to this courses is 28 October 2020. The classes will start from 1st November. The fee is rupees 2000 per course. Then you can mention your designation director. After that, legal notices. On behalf of Shri Somesh Thakur, District Judge Panipat, draft a legal notice to Ashok Pal, who is avoiding the receipt of summons. Direct him to appear in the court. In the court of Somesh Thakur, District Judge Panipat, legal notice. You can mention the date 20 December 2020. आपको डेट गिवन नहीं है तो आप कोई भी डेट लिख सकते हैं. टू अशोक पाल सन ऑफ श्री सुरेश पाल VPO झापतक गिन डिस्ट्रिक्ट पानीपत, इट हैज़ बीन प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस कोर्ट दैट श्री अशोक पाल इज अवॉइडिंग द सर्विंग ऑफ समन्स ऑफ दिस कोर्ट. हैंस दिस नोटिस इज इशूड इन ऑर्डर टू डायरेक्ट हिम टू अपीयर पर्सनली और थ्रू सम लॉयर इन दिस कोर्ट. लाइक ये लीगल नोटिस है, कोर्ट की तरफ से भेजा गया है कि जो विक्टिम है वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है, उसे पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा टू अपीयर पर्सनली और थ्रू सम लॉयर इन दिस कोर्ट ऑन 25 दिसंबर. आपने 20 दिसंबर को ये लिखा है तो 25 दिसंबर आपने 5 दिन की उसको डेट दे दी कि 25 दिसंबर तक वो प्रेजेंट हो 10 बजे तक. इशूड अंडर माई हैंड, और ये लेटर मैंने ही लिखा है, मीन सोमेश ठाकुर ने लिखा है जो डिस्ट्रिक्ट हैं जज हैं पानीपत के, और उन्होंने इसको 20 को लेकर 22 को सील कर दिया और 25 तक उन्होंने डेट दे दी. सोमेश ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट जज पानीपत. Then the next is auction notices. Auction notices also be based on नीलामी करना. You are Niranjan Verma of 31 Bengali Moholla, Patiala city. You are shifting to another city, so you wish to sell your house by auction. Draft a notice for the same. आप निरंजन वर्मा हैं, 31 बंगाली मोहल्ला पटियाला सिटी के रहने वाले हैं और आपने अपनी सिटी चेंज कर दिया है. अब आप अपने घर को बेचना चाहते हैं नीलामी करके, तो आपने नोटिस लिखा है. Auction notice, you can also write date 22 October 2020. Notice is hereby given for those who might be interested that the undersigned wishes to sell his house नंबर 31 बंगाली मोहल्ला पटियाला सिटी बाय ऑक्शन. आपने ऑक्शन की डेट रख दी 15 नवंबर 2020, मीन्स यहाँ पे 22 अक्टूबर को आपने नोटिस जारी किया, एक महीने बाद की रख दी, और 11 AM पे एट द प्रीमिसेस ऑफ द हाउस इन क्वेश्चन द सक्सेसफुल बाइडर विल हैव टू डिपॉजिट. जो सक्सेसफुल बाइडर है वो डिपॉजिट करे 25% ऑफ द अमाउंट एट द टाइम ऑफ बिड एंड द रेस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पोसेसन ऑफ द बिल्डिंग. सो यू कैन राइट योर नेम निरंजन वर्मा जिन्होंने ये नोटिस इशू किया. देन यू कैन मेंशन 31 बंगाली मोहल्ला पटियाला सिटी. देन द नेक्स्ट इज टेंडर नोटिस, मतलब एक तरीके से आप किसी चीज़ को ठेके पे दे रहे हो. You are the managing director of Paras Milk Supply Limited, 429 Bharatpur. Draft a notice inviting tenders for the supply automatic milk pouch filling and sealing machines. पारस मिल्क सप्लाई लिमिटेड भारतपुर. टेंडर नोटिस अक्टूबर 25 2020. आपको डेट गिवन नहीं है. सील्ड टेंडर्स आर इन्वाइटेड फॉर द परचेज ऑफ 2 ऑटोमेटिक मिल्क पाउच filling and sealing machines. The machines should be of 200 pouches per hour capacity. The tender forms can be obtained from the office of the Paras Milk Supply between 10 AM and 5 PM. Sealed tenders along with a draft from rupees 5,000 as earnest money should reach the office of the undersigned by 15th November 2020 at 10 AM. The tender will be opened the same day at 4 PM. That is Managing Director.